We will soon. We will start in like 2 to 3 minutes, guys. Okay. मुझे सबके इंट्रोडक्शन नहीं मिले अभी तक. लाइक अभी केवल एक ही स्टूडेंट ने बताया मुझे दैट ही इज फ्रॉम BPIT सेकेंड ईयर. बाकी सब थर्ड ईयर BPIT. ओके. BPIT फर्स्ट ईयर. Okay, so freshers are also here. So I think freshers की ये पहला कोई इवेंट होगा freshers के लिए. So freshers excited हैं? Okay, okay. Okay, so should we start with the session? I guess. Okay, so first of all, I just want to ask कि जितने भी लोग session में हैं, do they know about GCCP or like the campaign for which they are here? Just any idea about what's GCCP or what? Okay, you can write in that. Okay, no, no problem. I'm not expecting from freshers. Don't worry. I'm probably asking from those who have like registered in the campaign. Do they have any idea about what they have registered? Okay, okay. So, this campaign, I will tell you about the campaign first, okay? The GCCP campaign, which is Google Cloud Career Practitioner. It is a campaign started by Google Cloud to teach students about, yes, Google Cloud Career Practitioners. So this is a campaign started by Google Cloud to teach students like us in colleges about the cloud technology and educate them about the cloud services and also build career in this field because this technology is growing enormously and it's an initiative started by Google Cloud to teach students about the cloud services and the technology and they are providing course to students, they are giving resources and they are providing some hands-on lab experiences for the students to get familiar with the cloud and to explore what are the cloud technologies and uh, to build your career in this field. So this is the campaign and I hope those who are registered are excited to start their cloud journey with Google Cloud. Okay, so only 49 have joined till now. So I just want to know the registered students are here or not. Like just keep a hands on maybe to let me know. Hmm. Okay, only 20 have joined.
Yes, I will. I will. Don't worry. I will come to that part also. Don't worry. Okay. So, okay, fine. I'm starting with like the basic thing. I'm not expecting like to know you about anything. I will start from scratch and I will also not bore you people, okay? So, let's just talk about cloud. What is cloud actually? Okay. So, first of all, I will just simply read out what's written here. So, cloud computing is the on demand delivery of IT resources over the internet with pay as you go pricing. So, what does that mean even? So, let's just think of what was the era before the cloud. Like, cloud is a new technology which is like a decade ago, maybe. But if we think about what companies used to do before the cloud, okay, we have to be clear about that also. So, let's just know about what was before the cloud was not there. So, what companies used to do, companies used to purchase servers and databases and the hardwares to set up their businesses and to get their businesses online. And because of that, companies have to invest in these type of resources before even setting up their businesses, and most of their hard work and funds went into these type of resources. So instead of putting hard work in their business logic and thinking about the core business, they have to think about like the servers, how will they manage these servers, where will they put these servers, the rent of the space where these servers will be kept, and then the security charges, the maintenance, and the engineers that will be needed to manage these servers. So it was a lot for any business to keep up with these type of expenses. For example, suppose if you want to start a company and you are not having that much of enough funds, but to like start such a company you need to invest in some resources. Okay, you need to have some servers, some databases. Okay, so what happens uh, with the Google Cloud, as I said. So, what is this? It is an on demand delivery of IT resources. So, what you can do, whatever resource you want, you can just purchase it on demand. Whatever is your capacity, whatever is your need, you can purchase them as per your need, as well as you have to pay for whatever you are using. You do not have to pre-decide what resources you are going to buy, what a type of investment you have to do for the space that is needed to maintain those servers. You do not have to worry about all these things. You from now you have to just focus on your business logic, that is, and this is how business can grow much larger. So this is the whole concept behind the cloud computing. It is basically a way of focusing on the core business logic instead of maintaining physical data centers and worrying about the servers and those security issues. So it is a very good option for businesses to focus on their core logic instead of thinking about these things. So I hope you guys are clear with the logic about what is cloud and basic behind it. So sorry, I was not reading the messages. Please pin the PPT, blocking my notification. Uh, okay, fine. I will just switch on to the other PPT. So for यहाँ तक सबको clear है कि what is cloud and what is the like the basic and rough idea about cloud? Just please. Okay. Okay, fine. So I just give a very rough idea because freshers are also here. So I thought it will be a very basic thing to discuss what is cloud and okay, yeah, okay, fine. So coming to the Google Cloud. So Google Cloud is also a public cloud provider
Google Cloud provides services to these businesses and companies to use their services, their IT resources, and grow up their businesses. Google Cloud provide many type of services. Okay, I will just wait a second. I will share that PPT. Give me a second. Okay. Is my screen visible to all? Okay, fine. Uh, okay. So yeah, I was talking about the services provided by Google. So first range of services is basically the compute services. Like these are the basic services which any of a company need to get started with their businesses. So what is this compute services? So these are like the building blocks of any business, we can say. So there are compute engines. Compute engines are basically uh, virtual machines. Okay, so virtual machines are whenever you want to like so whenever you want to like log in into a system. For example, you want a Linux system or a Windows system. So any type of machine configuration with any type of operating system or any machine configuration you can find in this compute engine service provided by the Google Cloud. Okay, and next is Kubernetes. Um, okay, fine. Guys, please just mute yourself. Okay. Yeah. So next sort of service is Google Kubernetes engine. So this is a type of service which is a fully automated service that helps application to be deployed. So what happens when an application is ready, when it is a full-fledged, then you want to let your users to use it. So okay, this service helps to deploy your applications. So yeah, this is Kubernetes engine. Next compute service is your app engine. So app engine helps to build a full-fledged application on Google Cloud. This is a service provided by Google Cloud to build applications over Google Cloud. Then is your cloud functions. Cloud function is basically a serverless computing service in which you can put any language, uh, a code snippet, and you can check if your code is running or any sort of function that you want to test out. So cloud functions help in that. Then is your Cloud Run. Cloud Run is also serverless service, and it helps also to like test out services, test out small code that is running on your applications. Okay, so after the compute services, next we will talk about storage services. Okay, after the compute services, there are also storage services provided by Google because uh, we have data, we have to store it somewhere. Okay, so these are some services provided by Google for storage. So first is cloud big table. We all know that we have a lot of data to do querying and do analysis about those data. So in cloud big table you can put all those enormous amount of data and do querying on it. Okay, so next is your cloud storage. So this is a type of storage in which you do not have to see if your data is whether structured or unstructured. You can put any kind of data, and this is basically used for like your
when you don't know what type of data you need to store in your systems. Okay. Next is a cloud SQL. Now this type of data is storage services used for the structured data. For example, the database that is used for MySQL. So this service is used for that. This cloud spanner is a very special service, and it is used for like uh, when you have to like you have created several databases for your system, and you want to for example cache your data, because you have various databases across your system across various region, and you do not want any delay in that service. So cloud spanner helps you to cache those data and provide access very easily to those data. Next is your data store. Data store is simply used for like archiving, used for archive data, and it is used for storing large amount of data. There are also some analytical and machine learning services provided by Google Cloud. Okay, so some big data and machine learning services provided by Google Cloud. So first is your BigQuery. Then BigQuery helps us to get analytical insights from the data. For example, you have a lot of data with you and you want some useful insights from that data. So in that scenario, BigQuery is used for that. Next service is your PubSub. This is a very high level service. For example, suppose you are in a system where you want to publish some messages to your various departments. For example, you have a customer department, then you have a retailer department, and you want to set up a communication between those departments. So this service is basically used to set up communication between those departments. Next is your data flow. Data flow is used for checking on the service, the flow of the services. Okay, these are some high level services which we are not going to cover in this session. The ML services, these are some machine learning services provided by Google. First is AI platform. Okay, so this is an integrated service platform in which many AI models, some pre-trained models, some custom models are used. These are yeah, we are not we are in this course we are not gonna talk about like ML models, but we will learn about the compute services. We will learn about compute engines, and we are gonna create our VMs in those labs, and also we are gonna use the cloud SQL in our labs. Okay, so wait. Okay, wait a minute. Just give me a second. मीटिंग चल रही है. Okay, so like we have covered around the basics of Google Cloud and the services. Now, Siddhant will switch over and he will take you the services and also the task we have to complete for this campaign. Okay, so Siddhant, please give them an overview about what we have to do in this campaign. Okay? Okay.
ओके सो फर्स्ट ईयर काफ़ी पूछा है। फर्स्ट ईयर आई डोंट थिंक कि आपने रजिस्टर किया है कोर्स के लिए। सो नेक्स्ट ईयर ये कैंपेन फिर से होगा, आप उसमें रजिस्टर करना और फिर आपको कैन वी एक्सेस एनी कोर्स फ्रॉम द गिवन पाथ्स। वरुण। हम्म। हम्म। या इस कैंपेन के लिए आपको यही वाला पाथ फॉलो करना है जो अभी पाथ सिद्धांत ने दिखाया है। इसमें 13 एक्टिविटीज हैं जिसमें कुछ कोर्सेज हैं और 4 क्वेस्ट है। इसको कंप्लीट करने के बाद ही आपका ये वाला जो सर्टिफिकेशन है वो कंप्लीट होगा। और हम्म। हम्म। हाँ। फर्स्ट ईयर की एनरोलमेंट नहीं हुई है इस बार। नेक्स्ट ईयर आप लोग एनरोलमेंट करोगे इस कैंपेन के लिए। ओके this path which I have to complete requires much greater credits. See, जब आप फर्स्ट वाली लैब कंप्लीट कर लोगे ना उसके बाद आपको मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो आपने अभी शायद फर्स्ट लैब कंप्लीट नहीं की है इसलिए आपको 9 क्रेडिट से दिखा रहे हैं अभी। सो फटाफट से। हम्म। हम्म। एंड या बिकॉज जो भी स्टेप्स लिखे हैं ना वो बहुत लेमन लैंग्वेज में लिखे हैं और आप उसे पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। सो and the deadline is also 14th of December. So you have to complete all the 13 tasks before 14th of December. Okay. There are 4 quests in that, and there are some courses also. There are video lectures along with that. You can watch them, and after that there are some quizzes inside that also. So you have to complete those quizzes also. Yeah, I think you can share your batches on LinkedIn. See, yeah. See, the motto of this program is like to give free access to the courses and let students do some hands-on lab experiences on the resources which are like not free at all, because creating instances cost you so much and they are providing you labs around that so that you can
get insights like how to use those resources, how to create instances. So yeah. Hmm. No problem in future. See, um, see, जो हमें ये 13 टास्क मिला है अभी हमें जो ग्रुप की तरफ से आया है वो अभी 13 टास्क कंप्लीट करने को कहा गया है बिफोर 14th of December. Okay, although I'm not from BPRT, the session was held and thank you. एंड फर्स्ट ईयर प्लीज आप अपसेट ना हो बिकॉज आप लोगों का एडमिशन भी इतना लेट हुआ प्लस आप लोगों के ऊपर अभी ऑलरेडी सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने का और बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है एंड दैट्स व्हाई वी डिडंट एनरोल फर्स्ट ईयर इनटू दिस बट नेक्स्ट ईयर भी ये होने वाला है कैंपेन सो डोंट वरी you will get enrolled in that. Okay. um, hmm. Sakshi, are you talking about the registration process or doing the labs? Labs. Okay. So, as we told, incognito mode is preferred because when you are accessing those resources, there is an ID provided within that lab so that you can access with those particular ID only. Okay. Yeah, you can unmute yourself and ask now. I think Siddhant, just repeat what you just told, like the about the incognito mode. I think she is not clear right now. Hmm. Just show her once again. जिस आईडी से रजिस्टर किया था आपने उसी आईडी से करना है आपको. हम्म.
स्टार्ट करते ही आपको एटलीस्ट 6 मिनट्स का वेट करिए, 6 मिनट्स तो चलने दीजिए, छोड़ दीजिए 6 मिनट तक। अगर आप पूरे 45 मिनट्स भी छोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी 6 मिनट्स तक मिनिमम टाइम हो रहा है, और 45 मिनट्स के बाद रिसोर्सेज के एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि सारी ईमेल आईडी सब ये जो भी दे रखा है यहाँ पे आईडी सब एक्सपायर हो जाएगा ये। ओके, तो ये आपको 6 मिनट तक ऐसे चलने देना है, उसके बाद आपको मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा सिंपली। 6 मिनट तक चलने के बाद एंड लैब जरूर कर दीजिएगा। ओके, नहीं भी करोगे तो अपने आप एंड हो जाएगी 45 मिनट्स के बाद। इसके बाद आपको एक मंथली सब्सक्रिप्शन आ जाएगा आपके अकाउंट पे, आप जाकर के आराम से देख सकते हो तब तक है ये। एंड गाइज रिमेंबर डेडलाइन 14th ऑफ दिसंबर है, सो उससे पहले आप अपना पूरा पाथ कंप्लीट कर लें। ओके, व्हाट टू डू आफ्टर एंडिंग द लैब, गो अहेड विद द नेक्स्ट कोर्स। सिंपली पाथ में आना है, यहाँ पाथ सबको दिख जाएंगे, अकाउंट में आना है, पहले अकाउंट में आकर के आप सिंपली कैसे सर्च करो, जैसे आपको ये दिखेगा नहीं कहाँ पर है, तो आपको पता से मिल नहीं रहा, क्लाउड फील्ड को डालो सिंपली, सिंपली डालो गूगल पे, और ये आ गया पहला लिंक, ये चलेगा, ठीक है, सी, तो ये आपको ओके, तो यहाँ से आप होम पेज पे आ सकते हो। जब हमारा एक कोर्स खुलता है जो कि उस पे क्लाउड पे अवेलेबल था, सिंपली वहाँ से आप पाथ पे आकर के होम पे आओगे, पहले तो आप होम पे एंटर होते ही पाथ्स का यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर पाथ्स पे आएंगे आप, पाथ्स पे ये थर्ड वाली जो है, थर्ड वाला जो पाथ है यही करना है आपको अभी। ये पाथ 11 दिखा रही है, तो आपको यही करना है अभी, सारी के सारे कंप्लीट करने हैं। 13 बैचेस आपको मिल जाएंगे कंप्लीट करते ही, और ये सारे बैचेस आपको दिखते हैं आपके पब्लिक प्रोफाइल पे, प्रोफाइल का लिंक है, जब कहीं भी शेयर कर सकते हो, जिसके थ्रू कोई भी आपकी प्रोफाइल देख सकता है। और अगर आपने बैजेस कर रखे हैं तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी दिखेगी। जैसे एक मैं आपको प्रोफाइल दिखा दूँ, जैसे मैंने बैजेस कर रखे कई सारे, तो प्रोफाइल अच्छी दिखती है कि बैजेस करे हुए हैं, मतलब कि इंटरेक्ट कर रहा है क्लाउड की प्लेटफॉर्म पे, और काफी कुछ इसको भी पता है, काफी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब ये आपको पता चल जाता है कोई भी अगर आपकी प्रोफाइल एंटर करे तो, कि अभी एक्टिव है क्लाउड के ऊपर, गूगल क्लाउड थोड़ा सीख रहा है ये और ये सब। और इस पे हमेशा ये जो आप मैसेज देख रहे हो मेरे, तो ये हमेशा ना इवेंट्स आते रहते हैं क्लाउड के, तो आप इवेंट्स के थ्रू आप काफी नई नई चीजें सीख सकते हो क्लाउड के ऊपर। ओके, तो ऐसा नहीं कि आपने पाथ कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद आपके पास कुछ करने को नहीं है, आप इवेंट्स एंटर कर सकते हो, इवेंट्स में आपके बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, नई नई चीजें पढ़ने को मिल जाती है, जैसे ऐप स्क्रिप्ट वगैरह हो गई। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐप स्क्रिप्ट के बारे में काफी कुछ पता चला था। इसके बाद मुझे यहाँ पे वर्टेक्स सीआई के ऊपर मशीन लर्निंग का जो वर्टेक्स सीआई है, वर्टेक्स सीआई क्या करता है, मशीन लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वर्टेक्स सीआई पे जाकर के आप जुपिटर नोटबुक बना करके आप उस पे मशीन लर्निंग काफी कुछ मतलब सिंपली कर सकते हैं। जिसको मशीन लर्निंग पता है वो वर्टेक्स सीआई पे जाकर के मशीन लर्निंग इजीली कर सकता है, मतलब वहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे जुपिटर नोटबुक वहाँ पर आप यूज कर सकते हो मशीन लर्निंग के लिए। वर्टेक्स सीआई वहाँ पे प्लेटफॉर्म है, वर्टेक्स सीआई पे सर्विस देता है गूगल क्लाउड वर्टेक्स सीआई की, और ये जाकर के आप यूज करते हो वहाँ पे। ठीक है, ऐसा आपके पास काफी कुछ है, जैसे फ्लटर भी आप सीख सकते हो, फायरबेस भी आप सीख सकते हो, लुकर भी आप सीख सकते हो, काफी चीज गूगल शीट भी आप सीख सकते हो, काफी कुछ चीज सीख सकते हो इस कोर्स को करने के बाद भी आप। तो ऐसा है नहीं कि कोर्स कंप्लीट कर दे तो खत्म हो चुके हैं, आप काफी कुछ कर सकते हो। तो किसी ने हैंड रेज करा है, आप अनम्यूट करके आप अपनी बात रख सकते हो, अगर कुछ कहना है आपको। किसी को भी डाउट्स हैं? गाइस किस किस ने अभी तक लाइक फर्स्ट लैब कर ली है, जो मेल आई थी आपको जो अभी लैब दिखाया? ओके, गुड। सो उसके बाद आपको मंथली सब्सक्रिप्शन मिल चुका होगा। सो अब आप अपने कोर्सेज को स्टार्ट कर सकते हैं, जितने भी पार्ट्स हैं वो उसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, उसके बाद क्विजेज हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद 4 क्वेस्ट हैं, आपको वो भी कंप्लीट करना है। एंड 14th ऑफ दिसंबर इज द डेडलाइन, सो मेक श्योर कि आप उससे पहले सारी पार्ट्स को कंप्लीट कर दें।
जैसे ये मेरा पाथ मैंने आपको दिखाया, ठीक है, रिक्वेस्ट है यहाँ पर स्किल बैजेस भी मिलते हैं और कई बैजेस मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जैसे ये जो आपको रेड लाइन दिख रहा है या ग्रीन लाइन कोई भी दिखेगा, स्किल बैजेस की होती है ये। स्किल बैज में क्या डिफरेंस है और रेगुलर बैज में क्या डिफरेंस है? स्किल बैज में लास्ट में एक चैलेंज लैब होती है जो आपको खुद से करनी पड़ती है। तो आप ये खुद से भी कर सकते हो, यूट्यूब भी कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो यूट्यूब से किसी से भी, और आपको कभी भी हेल्प चाहिए तो आप ड्रॉप कर सकते हो अपना मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके, तो ये स्किल बैज ऐसे दिखते हैं और रेगुलर बैजेस आपको नॉर्मल दिखेंगे बिना इस लाइन के। सो दैट इज इट। वेट, मैं एक बार दिखा दूं। मैंने एक क्वेस्ट कर लिया है, सो मैं इन्हें दिखा देती हूँ। ओके, आई विल शेयर। You can stop sharing. I'm just going to send you. Okay. Okay, so this is the mail ID from which I have registered. Okay, so it's asking for the code. We have to enter the code. चैनल हो तो आप सिंपली क्या करो, आप जो भी चैलेंज लैब का क्वेश्चन है जैसे आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर, तो चैलेंज लैब को सिंपली कॉपी करो, पेस्ट करो वाइट यूट्यूब पे जाकर के, और अब कई सारे आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशंस वगैरह जो कि हेल्प कर सकते हैं आपको काफी चीज पे, ठीक है। तो ऐसा प्रेफर्ड मैं कुछ नहीं कह सकता, आप सिंपली आपको अपने आप ही प्रेफर देखना पड़ेगा। ओके, So yeah, I will show you the path first. For that, this is the path. Wait a second. And have to. हाँ, आप कोई भी क्वेस्ट कितनी बार कर सकते हो, बट एक लैब को करने का ना लिमिट है, 5 बार की लिमिट है। सो 5 टाइम्स से ज्यादा आप एक लैब को नहीं कर सकते हो। अगर कई बार होता है कि रिसोर्सेज हमारे एक्सेस मतलब आपको करना पड़ता है उसी चीज दोबारा से। कई बार क्या होता है कि एक ही लैब जो है अलग अलग क्वेस्ट आपको मिल जाएंगी, आपको कई बार करना पड़ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे 5 बार से ऊपर हो चुका है, सिंपली यहाँ पर आपको एक मिनट पहले ही कर देते, इस बात को मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। See, ये जो path है, this one, you have to complete this. Okay, so I have completed the lab, after which I have got the subscription. Okay, उसके बाद आपको ये जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं, ओके, गूगल फंडामेंटल्स, ओके, एंड क्यूबरनेटिस, और ये सारी आपकी इसमें वीडियोस हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, और उसके बाद कुछ क्विजेस भी हैं, ठीक है। सो इन्हें आपको कंप्लीट करना है, ओके, और फिर उसके बाद इसमें ये 4 क्वेस्ट हैं, ओके, ये चारों आपको कंप्लीट करने हैं। सो आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेस्ट, और देखो इस क्वेस्ट में बेसिकली क्या है, लैब्स है, इसमें टोटल 6 लैब है, ओके। सो लैब में कुछ नहीं है, जैसा आपने फर्स्ट लैब में किया वैसे ही इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको टास्क कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आपको ये लैब कंप्लीशन दिखेगा। सो इसमें इस वाले लैब में बेसिकली आपको वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करने हैं, इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, ओके। सो ये सारे टास्क मिलते हैं आपको, और लास्ट में जैसे बताया कि इसमें एक चैलेंज लैब भी होती है, सो ये कंप्लीट करनी होती है आपको, ठीक है।
सो ऐसे ही आपके पास टोटल 4 क्वेस्ट हैं जिसको आपको कंप्लीट करना है along with the courses also. So या टोटल 13 एक्टिविटीज हैं जिसमें ये फर्स्ट लैब था, ये कोर्सेज है और उसके बाद ये क्वेस्ट है जो आपको इस कैंपेन के लिए कंप्लीट करना है. ओके जिवेश कोई एनरोलमेंट निकल चुकी है तो अभी आप एनरोल दोबारा नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो आपने पूछा कि कैन वी रीडू फर्स्ट. ओके, मैं आपको एक बार चीज दिखा देता हूँ. यस जैसे ये मैं क्वेस्ट करा आपको आपको अच्छा लग रहा है क्वेस्ट, आप कई बार करने की कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है आपको एक बार में कंप्लीट नहीं हो, आप मल्टीपल टाइम्स इसलिए ट्राई कर रहे हो, एक बार में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है आपसे. ठीक है. सो आप कंप्लीट कर सकते हो. 5 टाइम्स की लिमिट है. 5 टाइम्स से ऊपर आपका अगर आपको एक्सेस करना है तो सिंपली आप जिसको एक्सेस करना है जिस लैब को उस पर आप क्लिक करिए, कॉपी करिए ये वाली लैब, और यहाँ पर ही आपको हेल्प का ऑप्शन आ रहा है. सो चैट सपोर्ट पे जा करके अब सिंपली अपना नेम ईमेल एंड जो भी प्रॉब्लम है वो डाल देंगे. जैसे यहाँ पे डाल सकते मैसेज क्या होगा मेरा कि मुझे ये जो पर्टिकुलर लैब है इसलिए मेरे को एक्सेस नहीं आ रहा है, इस पे मुझे आ रहा है कि रिसोर्स मेरा खत्म हो चुका है, 5 टाइम से ज्यादा एक्सेस मैं नहीं कर सकता हूँ. तो ये चीज आ रहा है इसके ऊपर. तो मैं यहाँ पर सिंपली डालूंगा, मैं लिख दूंगा कि आई कैन एक्सेस दिस लैब. ठीक है, आपको सारी चीजें डालनी पड़ेगी. ओके. सो यहाँ पर ईमेल नेम वगैरह सब डाल करके स्टार्ट होगा चैट. उसके बाद से वो सिंपली आपको एक्सेस दे देगा और 5 टाइम का एक्सेस आपको वहां से मिल जाएगा चैट के सपोर्ट के थ्रू. और ये बहुत फ्रेंडली होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. कुछ भी ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि आपको जबरदस्ती करे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. तो सिंपली फ्रेंडली चैट है, फ्रेंडली चैट सपोर्ट है, बहुत अच्छे हैं ये. ओके. और एक यहाँ पर आपको शायद मेल पे आया होगा कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो एफएक्यू सेक्शन पे आप जाकर के पढ़ सकते हो कोई भी चीज. ठीक है. और ये इनका मेल आईडी है जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधा मेल भी कर सकते हो उस चीज के ऊपर. ओके, सिंपल है. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? किसी और का कोई डाउट है? आई थिंक रजिस्टर स्टूडेंट्स काफ़ी कम आए हैं. वन मोर थिंग, एक बार आप पूछ लो लाइक कल एग्जैक्टली कवर क्या करना है. लाइक डू यू गाइस वांट गूगल क्लाउड like some more information to be shared about Google Cloud, or you want to like study what all is there in the lab specific पढ़ा सकते हैं या फिर Google Cloud के बारे आप लोग ले लो इसके इनपुट्स की कैसे करवाना है. सब अपने जिसको भी कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी अपना बताना है आपको आप चैट्स में डाल सकते हो. दोनों भी इजी पर है. चैट में डाल सकते हो कि आपको कल क्या करना है, आपको पढ़ना है कल, या फिर क्यूएनए कर सकते हैं हम कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को. सो आप बता दो. या कल का जो सेशन होना है उसमें आपको जो ये लैब्स हैं उसके बारे में पढ़ना है या फिर लाइक गूगल क्लाउड के बारे में पढ़ना है. सो उसके लिए भी आप बता सकते हो. सो आई थिंक हम थोड़ा बहुत इन्हें पढ़ा के अबाउट दी सर्विसेज और उसके बाद हम लैब्स के बारे में इन्हें गाइड कर सकते हैं बिकॉज या along with Google Cloud. Okay.
Google Cloud. हाँ, so तो कल पूरा सेशन अपना गूगल क्लाउड पे बेस्ड रख सकते हैं, लाइक वी कैन टेल देम मोर अबाउट इट एंड थोड़ा लैब स्पेसिफिक भी करा देंगे एंड में. एंड उसके बाद गाइज यू नीड टू टेल अस दैट यू वांट सम डाउट सेशंस फॉर अस फॉर यू, तो हम वो भी कंडक्ट आगे करवा सकते हैं बिकॉज वी आर कंडक्टिंग 2 सेशंस इन अ रो जस्ट बिकॉज वी हैव फेस्ट नेक्स्ट वीक एंड आफ्टर दैट वी हैव मिड सेमेस्टर एग्जाम्स. तो फिर आपको खुद हमें मैसेज लाइक रीच आउट करना पड़ेगा. यू कैन डीएम योर गूगल क्लाउड हेड्स और यू कैन टेल इट अस इन द ग्रुप. Yeah. तो हाँ, उसके आगे लाइक थ्योरी वाले सेशंस चाहिए और यू वांट लैब स्पेसिफिक सेशंस, या फिर ये भी कर सकते हैं कि 1 या 2 लैब करके भी दिखा दे, एक्सप्लेन कर दे क्वेश्चन. वो ऐसे भी हो सकता है, फिर डाउट सेशन भी हो सकता है. बट गाइस मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर लैब बिकॉज अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है. फिर फुल लैब कंप्लीट करनी पड़ेगी तभी आपका लाइक कंसिडर किया जाएगा. And that too before 14 December, considering 1 month, 1 week will be, utilized in your mid-semester. Yeah. So आज से ही स्टार्ट कर दो जिसने भी लाइक फर्स्ट लैब भी नहीं किया, जिसने अभी तक मंथली सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया, सो प्लीज़ कर दो बिकॉज उसकी भी डेडलाइन 30th नवंबर है. उसके बाद आप फिर एक्सेस भी नहीं कर पाओगे. सो एटलीस्ट एक्सेस कर लो और प्लस कोर्स तो कंप्लीट करना ही है. सो स्टार्ट विद द कोर्स. जो भी डाउट आए, हमने ग्रुप भी क्रिएट किया है, आप उसमें डाउट पोस्ट कर दो. अगर डाउट सेशन भी रखना हो तो हम डाउट सेशन भी रख लेंगे वीक्स में. और कल के सेशन में हम थोड़ा बहुत लैब के बारे में भी कवर कर लेंगे ताकि आपको आइडिया मिले कि आपको लैब्स कैसे करनी है और क्या आपको हेल्प कर सकता है उसमें. ठीक है. या ये भी कर सकते हैं सजेशन दैट फर्स्ट लैब हम लोग लाइव कर सकते हैं. Yeah. Everybody can open their labs and first lab एक बार साथ में कर सकते हैं, वो भी possible है. So that they also get on the track. फिर उसके बाद आगे बढ़ लेंगे. And guys, do you have any questions regarding GDSC or anything? If there are any freshers over here, because I can see there are only few people left. So if there are no further doubts, we can wrap up the session. Yeah. So I will suggest first of all, which are okay. So we are from third and final year. Himanshu, do you have a doubt? सो गाइज जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आज प्लीज़ जाके अपनी लैब्स का एक्सेस कर लो और उस लैब को कंप्लीट करके मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो आज प्लीज़. दैट्स वाई कल से हम फिर स्टार्ट कर सकते हैं उसके से. Okay, I don't think anyone have more doubts now. Yeah, so we can wrap up the session. Okay, guys, thank you so much for joining. That was a really nice session. Thank you, Tripti and Siddharth. Thank you so much for joining, guys.